Thank you, Poji. Students, some time ago we have discussed about a case in which there are four particles revolving in a circular path under the influence of their mutual gravitational attraction. वहां पे हमने बात करी थी जब म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में सर्कुलर मोशन हो रहा है तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एवरी पार्टिकल विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड. यहाँ पे सेम केस है फॉर द टू पार्टिकल. फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैव टेकन दिस एंड here we need to calculate the angular speed of each particle if particle is of mass 1 kg and they have to round a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. So this is the situation जहाँ पे हमारे पास दो particles हैं each of mass 1 kilogram and they are revolving in a circle of radius r, तो इनके बीच का separation होगा 2r एंड जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट करेगा वो ही इनके सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा इन दिस सिचुएशन. सो यहाँ पे इफ दे आर रिवॉल्विंग एट एंगुलर स्पीड ओमेगा तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी गिविंग m ओमेगा स्क्वायर r. द ग्रेविटेशनल फोर्स इज gm स्क्वायर बाई डिस्टेंस इज 2r होल स्क्वायर इज 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r. m1 gets cancelled out. Other mass is also of value 1 kilogram. So directly we are getting the value of omega is equals to under the root of g divided by 4r cube. That can be written as 1 by 2 root of g by r cube. That's the angular speed units when you take it. It will be in radian per second if g and r are substituted in SI units. That's the result of this problem. Thank you, Poji. Students, in this case we are going to talk upon time variation in pendulum clocks. It says there are two identical simple pendulum clocks. One is placed on the earth and two is placed on a space station located at a height h above the earth surface. तो यहाँ देखते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए जब स्पेस स्टेशन की बात हो रही है तो क्लोज हाइट पे नहीं होगा, इट विल बी क्वाइट एट अ सिग्निफिकेंट हाइट. सो हम जो स्मॉल h वाला रिलेशन है वो यूज नहीं करेंगे. इन दिस सिचुएशन इट इज सेइंग क्लॉक 1 and 2 ऑपरेट एट टाइम पीरियड्स ऑफ 4 सेकंड एंड 6 सेकंड रिस्पेक्टिवली एंड वी नीड टू चेक द वैल्यू ऑफ h की कितनी हाइट पे वो स्पेस स्टेशन लोकेटेड होगा. सो हियर इन द सॉल्यूशन वी कैन से the value of g is equals to gm by x square. This is what we use for the value of acceleration due to gravity. And the value of time period, we know it is inversely proportional to root g because it is 2 pi root of L by g. So 2 pi and L are constant for a given pendulum clock because both are identical. So in this case we can write T1 by T2 is equals to root of g2 by g1. So if we substitute the value of g and m are constant, so this will be root of x1 square by x2 square. So for the first case, if we talk upon the time period which is corresponding to a clock which is located on earth, the value of x1 is equals to re, this is re square, and x2 will be re plus h whole square. So directly we can substitute the values. This 4 by 6 is equals to this re upon re plus h. Simplifying this gives 4 re plus 4h is equals to 6 re, and this giving us the value of h is equals to re by 2. So if re is 6400, this comes out to be 3200 kilometers. That's the answer for this question. थैंक यू भोजी. वेरियस केसेस वी हैव टॉक्ड अपॉन कि किसी हाइट पे या डेप्थ पे जो जी का वैल्यू है वो कॉरस्पॉन्डिंगली डिक्रीज हो जाता है. यहाँ पे इट इज द सिमिलर क्वेश्चन अगेन which is based on the acceleration due to gravity experienced by a point mass at a height h above the surface of earth is same as that of the acceleration due to gravity at a depth alpha h, और h की वैल्यू very less than r ऑलरेडी गिवन है. सो फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगी, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रिलेशन यूज करेंगे और जो छोटा डिस्टेंस वाला रिलेशन है दैट्स व्हाट वी नीड टू यूज कि g एट अ हाइट h इज इक्वल टू g एट अ हाइट एट अ डेप्थ d फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, वी नीड टू यूज. सो इन दिस सिचुएशन h तो हम गए अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस बिकम gs इनटू 1 minus 2h over re, और g एट अ डेप्थ हम लेते हैं gs multiplied by 1 minus d by re. So in this situation gs gets cancelled out, this 1 also gets cancelled out. Directly the value of d we are getting is equals to 2h, और d हमको given है this alpha h, तो directly the value of alpha we are getting is 2. तो pretty straightforward question, आपको सिर्फ values substitute करनी है and you are going to get the final result. Thank you, Poji. Let us talk upon comparing gravity for two planets.
and the planets are of different densities. I think इस तरह के cases आपने grade 9 में करे होंगे, and exactly the similar type of question have already been asked in JEE Main. It says the radii of two planets A and B are R and 4R, और उनकी density is given है rho and rho by 3. It says the ratio of acceleration due to gravity at the surface GA by GB we need to calculate. So यहाँ पे आप अगर acceleration due to gravity on surface of Earth देखेंगे, we know it is given by GM by R square. और अगर mass of planet आप substitute करें, it is g by r cube multiplied by mass can be written as what? The mass value, this is r square, sorry. Mass can be written as 4 by 3 pi r cube multiplied by the density. So this gives us one r can be r cube and r square can be cancelled out. This 4 by 3 pi g r rho. This is the value of acceleration due to gravity on the surface of a planet. So g a by g b अगर हम calculate करते हैं तो 4 by 3 pi g gets cancelled out. This is r rho divided by, for the planet B radius is 4r and rho is rho by 3. So this comes out to be 3 by 4. Directly you are getting the result.